Good morning, everyone. Good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in applied in electrical engineering, semester 4. I am teaching you numerical methods and probability statistics. Today's topic: forward and backward Newton interpolation formula and backward Newton interpolation polynomials. Understood? Now, so let's start. In previous classes, we have discussed difference between step size, difference operator, finite difference operator, that is forward difference operator, backward difference operator. So we will discuss right now Newton forward difference interpolation. Understood? Forward interpolation for equispaced data with spacing h means if spaces are same means equispaced hai, that means space is constant. So f of x naught, this is difference f of x naught x1 means forward difference operator f of x1 minus f of x naught upon x1 minus x naught. Then x1 minus x naught is equal to, because xi equal to x naught plus ih, then x1 equals to x naught plus h. Understood? That means x1 minus x naught equals to h. So 1 upon h, and this is forward difference operator, that is delta f naught. Understood? Now, second divided difference, that is f of x1 x2 minus f of x naught x1 upon x naught x2 minus x naught. In previous classes we have discussed that. Now put the value, that is 1 upon 2h, because अगर x2 minus x naught होगा तो value कितना होगा 2h, 1 by 2h delta f naught, this value will be delta f1 minus 1 by h delta f naught. तो क्या जाएगा delta f1 minus delta f naught into h हो जाएगा, अपन में 1 upon h हो जाएगा, तो that is 1 upon 2h square del 2 f naught. 2 को लिख सकते हैं, we can write that 2 factorial h square. Understood? That means 1 upon 2 factorial h square into del 2 f naught. Then similarly we can write that f of x naught x1 x2 xn is equals to 1 upon n factorial into h ke power n del n f naught. Understood? This is called divided difference interpolating polynomial. This is called divided difference interpolating polynomial. Now put the value. Then if I want to find n degree polynomial, the Pn of x is equals to f naught x minus x naught. First divided difference की वैल्यू क्या है सर? डेल्टा f naught upon h into 1 factorial, we can write that. So second one is x minus x naught, x minus x1 into second divided difference को हम देख सकते हैं, write down del 2 f naught upon 2 factorial h square. Similarly plus continuous to end point plus x minus x naught x minus x1, that is x minus xn del n f naught upon n factorial into h ke power n. Understood? This is called Newton forward difference interpolation. क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन. अगर ये फॉरवर्ड ऑपरेटर यूज करेंगे तो फॉरवर्ड डिफरेंस, अगर बैकवर्ड ऑपरेटर यूज करेंगे तो बैकवर्ड डिफरेंस. अंडरस्टूड है? ओके, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस interpolation. Since the divided differences are symmetric, understood है? If divided differences are symmetric means अगर forward से लो या backward से लो, both are symmetric. तो Pn of x is equals to Fn means forward में हम कहाँ देते हैं? इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट से. तो Pn of x equals to Fn in plus x minus xn into f of xn minus 1 x minus xn minus 1, that is xn minus 1 xn. Understood है? Simply n terms तक ले लेंगे. Understood? So due to symmetricity we can write that f of xn comma f of xn minus 1, sorry xn minus 1 is equal to f of xn minus 1 comma xn लिख सकते हैं, which can be written as delta. अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? f of xn minus f of xn minus 1 upon xn minus xn minus 1. तो xn minus xn minus 1 की वैल्यू क्या होगी? h हो जाएगी into this is called delta fn, forward difference of backward forward difference. This is called backward difference operator ना. तो delta fn, understood है? Delta fn equal to fn minus 1. We have discussed in previous class.
ओके जैसे हमने F1 किया था तो F1 को क्या लिखा था F1 माइनस F0 अंडरस्टूड है सिमिलरली अगर इफ आई वांट टू फाइंड f of xn minus 1 that does x naught so कितने how many points are there two n points so 1 upon n factorial h के power n the backward operator के power n into fn now put the value pn of x equals to fn plus x minus xn into delta fn upon 1 factorial into h x minus xn into x minus xn minus 1 del 2 fn upon 2 factorial into h square plus that is plus x minus xn this is nth term that is x minus xn xn minus x minus xn minus 1 x minus xn minus 2 कहां तक जाएगा x minus x naught del n fn upon n factorial h के power n understood है for example if I am having for the data if I am having a data this is your example forward difference operator का and backward difference तो हमारे पास ऐसा एग्जांपल होगा तो क्वेश्चन आर एक्चुअली टू टाइप्स फर्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और कंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल वन टाइप सेकंड वन कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल थर्ड टाइप कंस्ट्रक्ट द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल वी हैव डिस्कस्ड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इन प्रीवियस क्लास डिवाइडेड डिफरेंस में क्या होता है अभी बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है आइदर कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और कंस्ट्रक्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल एक क्वेश्चन ये आता है 2.5 और 5 मार्क्स का अनदर क्वेश्चन क्या होता है इसी को एक्सटेंड कर देते हैं दैट इज कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल यूजिंग करस्पॉन्डिंग इंटरपोलेशन should that the interpolating polynomial is same prove that interpolation polynomial is so that interpolation polynomial is same understood है either forward difference interpolation से या backward difference interpolation से understood then solution step size के step length h equal to x2 minus x1 or x1 minus x0 अगर if I doing x1 minus x0 x1 is equals to minus 2 minus plus 4 तो minus 2 plus 4 how much 2 तो step size क्या होगा that is h now make the difference table this is your x and this is your f of x तो x की वैल्यू क्या होगी -4 -2 0 2 4 6 अंडरस्टूड corresponding f of x -139 -21 1 23 141 451 then this is first divided difference sorry first forward difference operator delta f or backward difference operator how can I find backward difference operator simply आपको कुछ नहीं करना टेबल में क्या करना है this term minus इस टर्म से प्रीवियस टर्म को x सब्ट्रैक्ट करना है -21 minus of 139 every term subtracted by its previous term understood means -21 को सब्ट्रैक्ट करना है सॉरी -139 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -21 से तो दैट इज विल बी -21 minus of -139 the value will be -21 plus 139 then answer will be 118 similarly 1 minus of 121 that will be 22 23 minus 1 that is 22 141 minus 23 118 1451 minus 141 that is 310 understood now second difference operator ठीक है second difference operator 22 minus 118 that is minus 96 22 minus 22 that is 0 118 minus 22 96 310 minus 118 that is 192 now again find the divided difference operator this is forward difference third degree forward difference and backward difference so that is 0 minus 9 minus of 96 minus plus that will be 96 96 minus 0 96 192 minus 96 96 understood now find the fourth degree difference the divided difference operator sorry forward difference operator forward difference and backward difference also that is 96 minus 96 that is 0 and 96 minus 96 that is 0 divided difference में क्या करते हो आप that means if I want to find first divided difference तो आप क्या करते हो -21 minus of minus 139 upon 2 -2 minus अंडरस्टूड करते हो वही करते हो तो आपके एग्जामिनेशन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में आपको एक टेबल आता है 2.5 मार्क्स का समटाइम्स 5 मार्क्स का कि कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तो आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है दैट्स इट और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल
टेबल सेम होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस में भी बैकवर्ड डिफरेंस में। अंडरस्टूड है? कुछ कुछ बुक्स में क्या करता है कि आप ये टेबल को जब ये सब्ट्रैक्ट करता है तो 118 को नीचे वाले में लिखेगा, मींस फॉरवर्ड डिफरेंस में नीचे की ओर शिफ्ट करता है कॉलम्स, सॉरी रोज, और बैकवर्ड डिफरेंस, सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस में नीचे ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, बैकवर्ड डिफरेंस में नीचे की ओर। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, कहीं भी आप रखो, ठीक है। नाउ यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल वी गेट P3 of x का फार्मूला, वी आर हैविंग फार्मूला, इफ आई वांट हाउ मेनी डिग्री, कितने डिग्री तक करा, 4 डिग्री का, बट 4 डिग्री 0 0 है तो दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, दैट मींस 3 डिग्री तक करेंगे तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा। 3 डिग्री n की वैल्यू 3 पुट करोगे फॉरवर्ड में, जब n की, इफ आई पुट n इक्वल्स टू 3 इन फॉरवर्ड, तो P3 of x इक्वल्स टू f नॉट x minus x naught into delta f naught upon 1 factorial into upon h, x minus x naught into x minus x1 del 2 f naught sim plus x minus x naught x minus x1 x minus x2 del 3 f naught, because 3 degree का। now put the value, तो हमने अगर वैल्यू पुट करी then value f naught is equals to minus 139, this is minus 139 upon plus x minus x naught, what is the value of x naught, this is minus 4, so x plus 4, understood है, into del 2 del f naught 118 upon h into 1 factorial, h equals to 2 into 1 factorial, that is 1, that is x plus 4 into 118 by 2 plus next one is x minus x naught into x minus x1, so x minus x naught is equals to x plus 4, x minus x1, what is the value of x1 here, that is minus 2, so minus minus plus, that is x plus 2, understood है? Okay, now 1 upon 2 factorial h square, look at this formula, 1 upon 2 factorial h square del 2 f naught, now 1 upon h square, तो h is equals to 2 का स्क्वायर 4 and 2 factorial is equal to 2, now del 2 f naught की वैल्यू, this is your del 2 f naught, that is minus 96, now put the value, sorry del 2 f naught just minus 96 no? Sorry, I have done a mistake, this is your minus 96, understood, this is minus 96 not minus 98, here are some mistake, लिखने में mistake हो गया, this is minus 96 plus x minus x naught, तो that x plus 4, understood, x plus 4 into x plus 2 into x minus x3, x minus x naught, x minus x1, x minus x2, the x2 is equals to, that is 0, that is x minus 0 and x3, that is del 3 f naught, del 3 f naught, that is 96, so 96 upon 3 factorial is equals to 6 and h cube equals to 8, when we simplifying this one, this is minus 139, 59 into x plus 4 minus 12 into x plus 4 x plus 2, 2x x plus 4 into x plus 2, and we simplifying this one and 2x cube plus 3x plus 1. Now using backward interpolation, using Newton backward interpolation polynomial, P3 of x is equals to 451 plus, because Fn, now this is your backward interpolation polynomial formula, this is Fn plus x minus xn into backward interpolation delta Fn upon 1 factorial into h, x minus xn minus 1 del 2 Fn upon 2 factorial h square. Similarly, going to x minus x naught delta n, delta के power backward operator n Fn upon n factorial h के power n. Now put the value. This is Fn is equals to, means F3, that is 451, Fn, what is the value, 451, understood? Now Fn, sorry, Fn Fn del Fn upon 1 into h factorial into x minus xn, x minus xn
then x minus xn into xn minus 1 plus 2 into x minus xn, x minus xn minus 1, x minus xn minus 2. When we simplifying this one, then 2x cube plus 3x plus 1. Please इसको आप every step कर लेना. आप जब when you simplify that 2x equal to 2x cube plus 3x plus 1 मिलेगा. Both polynomials are same, so we can say that आपको यही proof करना था. That means Newton backward interpolation polynomial and Newton forward interpolation polynomial is same for any data. Understood? Okay. Now some examples. Construct the divided difference table for the following data. आपको divided difference table भी निकालना है इसका. Then आपको इसका निकालना है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. देन इसको आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल एंड फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. Similarly, these two questions and prove that delta forward operator delta minus backward operator delta minus forward operator delta is equals to minus delta into delta forward into backward. If f of x equal to e की power ax, then prove that, then show that delta del n e की power ax is equals to e की power ah minus 1 into e की power ax. Now prove that. Now last topic, relation between differences and derivative using Taylor series, because we know that forward operator delta f of x equal to f of x plus h minus f of x. Understood? When we expand by using Taylor series, f of x plus h की वैल्यू क्या होती है? f of x plus h f dash x plus h square by 2 f double dash x plus h cube by 3 f triple dash f and so on. तो when f of x minus f of x cancel out, तो बचेगा क्या? h f dash x, h square by 2 f double dash of x and so on. Neglecting the higher order. Understood? If we neglect these higher order, because h is very small, then delta f of x is equal to h into f dash x. Then f dash x is approximately equals to 1 by h delta f of x. Understood? Similarly, for second del 2 f of x equal to h square f double dash x. Understood? Okay, means second order differential means f double dash of x equal to 1 upon h square del 2 f of x. Understood? We know that shift operator E f of x equals to f of x plus h, then f of x plus h by Taylor series expansion f of x plus h f dash x plus h square by 2 f double dash of x plus h cube by 3 factorial into f double triple dash of x and so on. So we can write that if I've taken common f of x common, because f of x plus h, f dash x को we can write that d into f of x. अरे f dash x को d f of x लिख सकते हैं ना, कैपिटल D plus d h square d square f of x, h cube by 3 factorial d cube f of x. Understood? When we taken f of x common, then 1 plus h d upon 1 factorial h square d square 1 2 factorial h cube d cube upon 3 factorial into that is f of x. Then x e f of x equals to e की power h d f of x. So equal to e की power h d and our h d equal to ln of e. तो h d equal to ln of e and e की वैल्यू फॉरवर्ड ऑपरेटर के फॉर्म में क्या होती है? That is because we know that e equals to क्या होता है? डेल्टा फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होता है? e minus 1. तो e equals to 1 plus delta and hd equal to ln 1 plus delta. Similarly, we know that 1 minus e inverse equals to backward delta. So 1 minus delta e inverse is equals to e. तो क्या हो जाएगा? hd equal to ln of 1 minus backward delta का whole inverse. When we simplifying this one, then hd equal to minus of ln 1 minus delta. Understood? Because we know that central difference operator delta is equals to e की power minus half, e की power half. This one is half, sorry. This is minus, this is not minus half, this is half. Minus e की power minus half is equal to e की power hd by 2 minus e की power minus hd by 2 is equals to 2 into sine hyperbolic hd by 2. Understood? Though, so we have discussed today three things. First one, Newton forward difference interpolation polynomial. Second one is Newton backward difference interpolation polynomial. Third one is relation between
sorry, relation between derivatives and difference operator. Third one is relation between differences and derivatives. Third one is hd और e के बीच में forward operator, backward operator. And this is most important, sometimes in your examination they can ask prove that delta sorry, central difference operator delta is equals to 2 into sine hyperbolic hd by 2, and you prove this. Okay, and in next classes we have discussed in I think interpolation polynomial is finished. And हाँ, just listen one thing कि आप ये डिफरेंस टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डिफरेंस टेबल का आएगा ही आएगा, और एक क्वेश्चन न्यूटन फॉरवर्ड का या तो न्यूटन बैकवर्ड का 100% आपके एग्जाम में आएगा. सो प्लीज डू इट केयरफुली. और इसका क्वेश्चन बड़े सिंपल है, अंडरस्टूड है. इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आता. आपको सिंपली क्या करना है, डिफरेंस मतलब अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको डिफरेंस टेबल भी प्रिपेयर हो जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, all the things you have cleared. Okay, understood. तो you must be practice all the things. एक या 2 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना, और इसके बाद पॉलिनोमियल निकाल लेना, लगा लेना और निकाल लेना. और ये जो 2 क्वेश्चन गिवन है इनको भी कर लेना. और ये प्रूफ दैट वाला ये सिंपल है, बिकॉज फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा क्या लिखोगे, ई के फॉर्म में वैल्यू रखना. ई के फॉर्म में करोगे इजीली हो जाएगा. अंडरस्टूड है. ओके, नो आई थिंक आई हैव डन. So thank you so much everyone. Okay, in next class we will discuss, okay, we will decide that one. Okay, thank you so much.